નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓનલાઈન શિક્ષણમાં આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 8 જેમાં ત્રીજું કાવ્ય શીખી ગયા હતા. તો બધા જ વિદ્યાર્થી મિત્રો પોતાની પાઠ્યપુસ્તક ખોલે અને પેજ નંબર 16 ઉપર એક કાવ્ય આપેલું છે જે આપણે શીખી ગયા છીએ. હવે આપણે અભ્યાસ તરફ જઈએ. તો બધા જ વિદ્યાર્થી મિત્રો પેજ નંબર 17 ખોલશે, જેમાં અભ્યાસનો પહેલો પ્રશ્ન આપણને આપ્યો છે કે પ્રશ્ન કે ઉત્તર दीजिए. तो एमा पहलो प्रश्न આપણને આપેલો છે કે इंसान को बांटने का क्या अर्थ है. तो तेनो जवाब છે कि इंसान को बांटने का अर्थ है कि सभी मनुष्य को समान दृष्टि से न देखना. आज ऊंच नीच, जाति पाति, गोरा काला आदि भेद कर लोगों में अलगाव की भावना पैदा कर दे गई है. सभी मनुष्य के रक्त में एक जैसी लालिमा तथा उनके एक जैसी भावनाओं की अनदेखी कर केवल उनके बाहरी स्वरूप पर ध्यान दिया गया है. इस प्रकार इंसान का बंटवारा किया गया है. तो इस प्रकार આપણે इंसान को बांटने का अर्थ है. હવે આપણે બીજો પ્રશ્ન જોઈએ તો બીજો પ્રશ્ન આપણને કહે છે કે लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया है. तो तेनो जवाब છે कि कुछ लोगों ने भगवान मंदिर को, तो कुछ लोगों ने भगवान मस्जिद से रहते हैं. कुछ लोगों ने अपने भगवान के लिए गिरजाघर बनाए गए हैं. यही भगवान को लोगों ने अलग अलग ढंग से देखा है. वे उनकी अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं. इस तरह लोगों ने भगवान को बांट लिया है. હવે એના પછી ત્રીજો પ્રશ્ન આપણને આપ્યો છે કે चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है. तो तेनो जवाब છે કે चट्टान का अर्थ है कि लोगों को जो भेदभाव के जुल्म सहते सहते पत्थर जैसा कठोर हो गए हैं, हमें उन लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए. उन्हें भी उपनत्व प्रदान करना चाहिए. इस प्रकार प्यार का शीतल जल देकर चट्टानों की प्यास बुझाई जा सकती है. હવે એના પછી જોઈએ તો પ્રશ્ન નંબર 2. હવે પ્રશ્ન નંબર 2 ઉપર આપણને આપેલું છે કે इस काव्य को आरोह अवरोह के साथ गाइए तथा समूह गान कीजिए. જે આપણે ગાઈ લીધી છે, બરાબર છે. હવે એના પછીનો આપણને ત્રીજો પ્રશ્ન આપેલો છે. હવે ત્રીજા પ્રશ્નમાં આપણે જોઈએ તો ત્રીજો પ્રશ્ન આપણને કે નિમ્નલિખિત કાવ્ય પંક્તિ કા ભાવાર્થ बताइए. બરાબર, ભાવાર્થ આપણને બતાવવાનું કહ્યું છે. તો આપણને કાવ્ય પંક્તિ પૂછેલી છે, એનો આપણે ભાવાર્થ સમજાવવાનો છે. તો આપણને પહેલી કાવ્ય પંક્તિ આપેલી છે કે અભી રાહ તો शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है. तो આપણે આ કાવ્ય पंक्तिनो भावार्थ समझाविए तो कि दुनिया में समानता की भावना फैलने की अभी तो शुरुआत हुई है. समानता का भाव पूरी तरह फैलने में अभी देर है. उसके लिए अभी बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा. बिजली की रोशनी अभी केवल महलों धनी लोगों के घरों में नहीं है, गरीबों के घरों में तो अभी दीपक ही जल रहा है. यह काव्य पंक्ति द्वारा આપણને એ સમજાવવા માંગે છે. હવે પેજ નંબર 18 ઉપર આપણે જોઈએ તો પેજ નંબર 18 ઉપર આપણને સ્વાધ્યાય આપેલું છે. હવે સ્વાધ્યાયમાં આપણને પહેલો પ્રશ્ન આપેલો છે કે प्रश्न के उत्तर दीजिए. તેમાં પહેલો પ્રશ્ન આપણને આપેલો છે કે कविता के अनुसार अब तक किन चीज़ों का बंटवारा हो चुका है. तो तेनो जवाब है कि कविता के अनुसार अब तक मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर आदि के रूप में भगवान को बंटवारा हो चुका है. इस तरह भिन्न भिन्न देशों के रूप में धरती और सागर भी बांट लिए गए हैं. હવે એના પછીનો બીજો પ્રશ્ન આપણને પૂછ્યો છે કે किसी की मुस्कान को कोई रोद नहीं पाएंगे. तो तेनो जवाब है कि सर्वत्र समानता के भाव फैलने पर लोगों में परस्पर अपनत्व की खुशी होगी. तब कोई किसी पर जुल्म कर
उसकी मुस्कान को रोध नहीं पाएगी, अर्थात के नष्ट नहीं कर सकेगा। तो ત્રીજો પ્રશ્ન આપણને પૂછવામાં આવેલો છે। તો ત્રીજો પ્રશ્ન આપણને કહે છે કે हरी भरी धरती को कौन सी परिस्थितियाँ रेगिस्तान में बदल सकती है। तो तेनो जवाब है कि वर्षा के लगातार अभाव और भूकंप के तेज झटके धरती की हरियाली नष्ट कर देता है। तो तेनो जवाब है कि वर्षा के लगातार अभाव और भूकंप के तेज के झटके धरती की हरियाली नष्ट कर सकते हैं। प्रकृति के ए रौद्र रूप हरी भरी धरती को रेगिस्तान में बदल सकते हैं। हवे एना पछीनो आपने चौथो प्रश्न आपेलो छे कि उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है। तो तेनो जवाब है कि उजाले को बंदी बनाने का अर्थ है कि उसे अपने अधिकार में रखना। इसलिए बिजली की रोशनी अभी धनवानों के घरों में ही दिखाई देती है, गरीबों की झूंपड़िया में नहीं। एनो अर्थ एवो थाय छे। हवे एना पछी जोईए तो आपने पांचमो प्रश्न पूछो छे कि यह कविता हमें क्या संदेश देती है। तो तेनो जवाब है कि यह कविता विश्व के लोगों को सभी तरह के भेदभाव भूलकर मेल मिलाप से रहने की सीख देती है। इस प्रकार यह हमें विश्व बंधुत्व का संदेश देती है। तो अहींया आपणो पहलो प्रश्न पूरो थाय छे। हवे बीजो प्रश्न आपणे जोईए तो बीजो प्रश्न आपने पूछ्यो छे कि निम्नलिखित शब्दों का शब्दकोश के क्रम में लिखिए। शब्दकोशना क्रम में आपणे तेने गोठववाना छे। तो आपणे अहींया शब्द आपी दीधा छे। तो આપણે જોઈ લઈએ તો સૌ પ્રથમ આપણને આપ્યું છે પ્યાસી, પછી આપ્યું છે આંગણ, સાગર, ઇન્સાન, વિતાન, ઉપર અને રેગિસ્તાન। હવે નીચે આપણને આપેલું છે કે મંજિલ, ઘાટી, ગિરધર, ગિરજાઘર, મુસ્કાન, ચટ્ટનટાન અને ઉદાસ અને બંદી એવું આપેલું છે। તો સૌ પ્રથમ આપણે જોઈએ તો શબ્દકોશ પ્રમાણે સૌ પહેલાં કયું આવશે તો કે આંગણ, પછી ઇન્સાન, પછી આવશે ઉદાસ, એના પછી ઉપર, પછી ગિરજાઘર, પછી ઘાટી, પછી ચટ્ટાન અને પ્યાસી, એના પછી બંદી, પછી આવશે મંજિલ અને પછી મુસ્કાન, એના પછી રેગિસ્તાન, વિતાન અને છેલ્લે આવશે સાગર। હવે ત્રીજો પ્રશ્ન આપણને પૂછવામાં આવ્યો છે कि आज के इस आधुनिक परिवेश में संयुक्त परिवारों की जगह एकलह परिवारों ने ले ली है। शू कीधुं कि एकल परिवार एटले के एकलो परिवार। तो जेना विषे आपणे लखवानुं छे कि कक्षा में चर्चा कीजिए, तेनी चर्चा करवानी छे। तो सौ प्रथम जोईए तो आपणे कह्युं छे कि आज संयुक्त परिवार की जगह एकलह परिवार की हवा चल रही है। सुभाष, तुम इस बारे में क्या सोचते हो। तो तेना विषे कहिए तो आपणे विचारीए छीए कि गुरुजी समय के अनुसार जो परिवर्तन होते हैं उसे अच्छे ही होते हैं। आज संयुक्त परिवार बूढ़े व्यक्ति की तरह ही बूढ़े और अनुप्रयोगी हो गए हैं। हवे गुरुजी संयुक्त परिवार बरगद के वृक्ष की तरह होते हैं, उनका महत्व न समझने वाले ही उन्हें बुराई करते हैं। हवे गुरुजी हमारे परिवार एकल परिवार है कि जैसे पिताजी, माँ, दादी और मैं, बस ये 4 जन ही हमारे परिवार के सदस्य हैं। घर में बड़ी शांति रहती है। जब हम संयुक्त परिवार में थे तब रोज आपस में झगड़े होते हैं। पुरुष खर्च के बारे में और महिला काम के बारे में झगड़ती थी। हम शांति से पढ़ भी नहीं सकते थे, इसलिए मैं तो एकल परिवार ही पसंद करता हूँ। हवे मैं भी प्रशांत की बात को समझ करता हूँ कि जब मेरी माँ बीमार हो जाती थी तब मुझे बहुत काम करना पड़ता था। ब्रेड खाकर ही काम चलाना पड़ता था। पिताजी शाम को आते हैं तब खिचड़ी बनती है। यदि संयुक्त परिवार होता तो दादी या
चाची के हाथ का खाना हमें मिल सकता है। जो બધા ઘણું અલગ અલગ વિચારે છે, અમુકને સંયુક્ત પરિવારમાં રહેવું ગમે, અમુકને એકલા રહેવું ગમે, તો બધા પોતપોતાના અનુભવ કહે છે કે જે એકલા રહેતા હોય એને સંયુક્ત પરિવાર ગમતો હોય, અને સંયુક્ત પરિવારમાં રહેતા હોય એને એકલા રહેવું ગમતું. એટલે બધાને તમારા ઘરમાં તમને કેવું કુટુંબ ગમે છે તેના વિશે તમારે અહીંયા ચર્ચા કરવાની છે, તેના વિશે તમારે લખવાનું છે. હવે ચોથો પ્રશ્ન આપણને કીધો છે કે અપૂર્ણ કાવ્ય કો પૂર્ણ કીજીએ. જે અધૂરું કાવ્ય છે તેને આપણે પૂરું કરવાનું છે, બરાબર. તો આપણને આપ્યું છે રાત હોને પર મેં નિકલતા સબકો દેતા હું શીતલતા. જો આપણને કીધું છે તો એના પછી આપણે પૂરું કરવાનું છે. તે કો મુझे देख सकते दिल बहलते बच्चे मुझे पाने को मचलते सब कहते हैं मुझको मामा हर बालक है मेरा भांजा यो तो मैं तारों का राजा. તો તેમાં શું આવશે? આકાશમાં રહેલા ચાંદા મામા આવે ને તેનો જવાબ. તો અહીંયા આપણે પૂરું કરીએ છીએ. હવે આગળનું પાઠ 3નું આપણે રિવિઝન કરી લઈએ એસએમમાંથી. તો બધા જ વિદ્યાર્થી મિત્રો પોતાની એસએમ ખોલશે અને પેજ નંબર 6 પર ત્રીજો કાવ્ય આપણને આપેલું છે જેનું આપણે રિવિઝન કરી લઈએ. હવે સૌ પ્રથમ જોઈએ તો પહેલો પ્રશ્ન આપણને આપેલો છે કે નિમ્નલિખિત प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए. तो પહેલો આપણને આપેલો છે વિકલ્પ કે મજબૂર કોણ હૈ. તો તેમાં આપણને 4 વિકલ્પ આપેલા છે કે આદમી, રોશની, બગિયા અને દીપક. તો તેનો જવાબ આવશે દીપક. હવે બીજું જોઈએ તો આપણને આપેલું છે કે કવિ કિસને बांटने के लिए कहता है. तो तेनो जवाब छे इंसान को. किसी को बांटने के लिए कहते हैं तो के इंसान को बांटने के लिए कहते हैं. હવે ત્રીજો આપણને પૂછેલું છે કે કિસકે બિના જગ સુના રેગિસ્તાન હૈ. તો તેનો જવાબ આપણને ઓપ્શન આપેલા છે તો તેનો જવાબ આવશે પ્યાર. ચોથો વિકલ્પ આપણને આપેલો છે કે પ્યાસી કોણ હૈ. તો તેનો જવાબ આવશે ચટ્ટાન, બરાબર. હવે એના પછીનો પ્રશ્ન 2 આપેલો છે કે સહી વાક્यांश चुनकर પૂરા વાક્ય ફિર સે લીખીએ. તમને ઉપર વાક્ય આપેલું છે તેને પૂરું કરી અને તમારે ફરીથી એ વાક્ય લખવાનું છે. તેના 3 નીચે ઓપ્શન આપેલા છે. હવે મંદિર, મસ્જિદ, गिरजा घर बनाने का मतलब है. तो कयो मतलब थશે કે पूजा घरों के स्वरूप के बताना है, सच्चा भक्ति प्रकट करना है કે भगवान के बंटवारा करना है. तो તેનો જવાબ આવશે કે ભગવાન કા બંટવારા કરના. હવે બીજું આપણને આપેલું છે કે મંજિલ બહોત દૂર લગતી है क्योंकि. તો તેનો જવાબ આવશે કે અભી તો રાહ शुरू हुई है. પેલો આવશે, બરાબર. હવે ત્રીજું જોઈએ તો જગ સુના રેગિસ્તાન જૈસા લગતા है क्योंकि. તો તેનો જવાબ આપણને આપેલો છે કે यहाँ प्यार की बारिश नहीं हो रही है, બરાબર. તો શું આવશે? બ એનો જવાબ આવશે. હવે એના પછીનો પ્રશ્ન 3 કોષ્ટક में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. તમને કાઉન્સમાં શબ્દ આપી દીધેલા છે તેના પરથી તમારે નીચે ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે. હવે ખાલી જગ્યામાં આપણને ઉપર શબ્દો આપેલા છે કે આંગણ, વિતાન, રેગિસ્તાન, મંજિલ અને સૂરજ. તો પહેલી ખાલી જગ્યા આપણે જોઈએ તો કે અભી રાહ તો शुरू हुई है, ખાલી જગ્યા બેઠી દૂર है. તો શું આવશે? મંજિલ બેઠી દૂર है, મંજિલ આવશે. હવે બીજો ખાલી જગ્યા આપણને આપેલી છે કે મિલા ન ખાલી જગ્યા કા સંદેશા હર ઘાટી મેદાન કો. તો શું આવશે એનો જવાબ? सूरज આવશે. શું આવશે? सूरज. ત્રીજું જોઈએ તો કે अब भी हरी भरी धरती है ऊपर नील ખાલી જગ્યા है વિતાન. વિતાન એટલે કે આકાશ. તો કે શું છે? નીલ વિતાન है. ચોથી ખાલી જગ્યા કે પર ન પ્યાર हो तो जग सुना जलता ખાલી જગ્યા है. શું આવશે? રેગિસ્તાન. રેગિસ્તાન એટલે કે રણ. પાંચમી ખાલી જગ્યા કે हर उदास ખાલી જગ્યા કે हल तो खिलती हुई
बहार पर શું કીધું છે કે हर उदास खाली जगह को हल्को खिलती हुई बहार है। तो आंगण आंगण એટલે કે આંગણું બરાબર। હવે પેજ નંબર 6 ઉપર આપણે જોઈએ। પેજ નંબર 6 ઉપર આપણને प्रश्न आपेलो छे चौथो कि निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। तो पहलो प्रश्न आपने आपेलो छे कि इंसान को बांटने से क्या तात्पर्य है। तो तेनो जवाब छे कि इंसान को बांटने से यह तात्पर्य है कि उससे छोटे बड़े ऊंचे नीचे जाति पाति और गोरे काले का यादी समूह के विभाजित करना चाहिए। હવે બીજો પ્રશ્ન આપણને આપેલો છે કે કવિ के अनुसार कौन सी मंजिल बहुत दूर है। तो तेनो जवाब छे कि कवि के अनुसार पूर्ण मानव समानता की मंजिल बहुत दूर है। त्रीजू જોઈએ तो कि उजियाला कहाँ बंदी है। तो तेनो जवाब छे कि उजियाला धन संपन्न लोगों के घरों में बंदी है। चौथું જોઈએ तो कि सूरज का संदेशा किसको नहीं मिला। तो तेनो जवाब छे कि सूरत का संदेशा हर घाटी और मैदान को नहीं मिला। पांचमो प्रश्न कि धरती के ऊपर किसका वितान है। तो कि धरती के ऊपर नीले गगन का वितान है। छठो प्रश्न कि प्यार के अभाव में जगत कैसा है। तो तेनो जवाब छे कि प्यार के अभाव में जगत जलते हुए रेगिस्तान जैसा है। सातमो प्रश्न कि सबके साथ उठने का क्या अर्थ है। तो तेनो जवाब छे कि सबके साथ उठने का अर्थ है कि सब में समानता की भावना होना। आठमो कि उदास आंगन का हक किस पर होना चाहिए। तो तेनो जवाब छे कि उदास आंगन का हक खिलती हुई बहार पर होना चाहिए। હવે એના પછીનો પ્રશ્ન આપણને આપેલો છે કે નિમ્નલિખિત પ્રશ્ન के उत्तर दो दो वाक्य में लिखिए। तो पहलो प्रश्न આપણને આપેલો છે कि कविता के अनुसार अब तक किन चीज़ों का बंटवारा हो चुका है। तो तेनो जवाब छे कि कविता के अनुसार अब तक मंदिर मस्जिद और गिरजाघर आदि के रूप में भगवान को बंटवारा हो चुका है। इसी तरह भिन्न भिन्न देशों के रूप में धरती और सागर भी बांट लिए गए हैं। बीजो प्रश्न आपने आपेलो छे कि हरी भरी धरती को कौन सी परिस्थितियां रेगिस्तान में बदल सकती है। तो तेनो जवाब छे कि वर्षा के लगातार अभाव और भूकंप के तेज के झटके धरती की हरियाली नष्ट कर सकते हैं। प्रकृति के रुद्र रूप हरी भरी धरती को रेगिस्तान में बदल सकती है। तीजो प्रश्न आपने आपेलो छे कि उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है। तो तेनो जवाब छे कि उसे अपने अधिकार में रखना, इसलिए बिजली की रोशनी अभी धनवानों के घरों में ही है, गरीबों के झोंपड़ियों में नहीं है, ऐसा अर्थ समझना चाहिए। चौथो प्रश्न आपने पूछेलो छे कि यह कविता हमें क्या संदेश देती है। तो तेनो जवाब छे कि यह कविता विश्व के लोगों को सभी तरह के भेदभाव भूलकर मेल मिलाप से रहने की सीख देती है। इस प्रकार यह हमें विश्व बंधुत्व का संदेश देती है। હવે એના પછીનો પ્રશ્ન આપણને આપેલો છે કે निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो कि इंसान को बांटने का क्या अर्थ है। तो तेनो जवाब छे कि इंसान को बांटने का यह अर्थ है कि सभी मनुष्य को समान दृष्टि से न देखना। आज ऊंच नीच जाति पाति गोरा काला आदि भेद कर लोगों में अलगाव की भावना पैदा कर सकता है। सभी मनुष्य के रक्त में एक जैसी लालिता के उनके एक जैसी भावना को अनदेखी कर केवल उनके बाहरी स्वरूप पर ध्यान दिया गया है। इस प्रकार इंसान के बंटवारा किया गया है। હવે બીજો પ્રશ્ન આપણને આપેલો છે કે લોગોને
भगवान को किस प्रकार बांट लिया है? तो तेनो जवाब है कि कुछ लोगों ने भगवान को मंदिर तो कुछ लोगों ने भगवान को मस्जिद को में रहने के बांट दिया है। कुछ लोगों ने अपने भगवान के लिए गिरजाघर बनाए गए हैं। तो एक ही भगवान को लोगों ने अलग अलग ढंग से देखा है, वे उनकी अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। इस तरह लोगों ने भगवान को बांट दिया है। હવે એના પછી આપણને નીચે આપેલું છે કે ધર્મ ઓર ઉસકે ધર્મ ગ્રંથ કી જોડી મિલાઈએ. હવે આપણને અ કરીને આપેલું છે જેમાં ધર્મ આપેલો છે અને સામે તેના ઓલામાં ધર્મ ગ્રંથો આપેલા છે. તો પહેલાં આપણે ધર્મ જોઈએ તો કે ઇસ્લામ ધર્મ, શીખ ધર્મ, ઈસાઈ ધર્મ, હિન્દુ ધર્મ અને પારસી ધર્મ. તો સામે આપણને ધર્મ ગ્રંથમાં આપેલું છે કે બાઇબલ, અવેસ્તા, કુરાન, ગુરુ ગ્રંથ સાહબ અને ગીતા, જે આપણને સામે એના ધર્મ ગ્રંથો આપેલા છે જે આપણે જોડવાના છે. બરાબર. તો ઇસ્લામ ધર્મમાં કયો આવે? તો કે કુરાન આવે. શું આવે? કુરાન આવે. હવે જોઈએ બીજું શીખ. તો શીખ લોકોનો ધર્મ ગ્રંથ કયો છે? તો ગુરુ ગ્રંથ સાહેબ એ એનો ધર્મ ગ્રંથ છે. બરાબર. ત્રીજું ઈસાઈ લોકોનો ધર્મ ગ્રંથ કયો છે? તો કે બાઇબલ છે. હવે હિન્દુ ધર્મ આપણો કયો છે? તો કે ગીતા એ આપણો ધર્મ ગ્રંથ છે. અને પારસી લોકોનું છેલ્લે વૈધું શું આવશે? અવેસ્તા. બરાબર. એ પારસી લોકોનું છે. તો આવી રીતે એના ધર્મ ગ્રંથો છે. અહીંયા આપણે આપણું રિવિઝન પૂરું કરીએ છીએ. જય હિન્દ. અસ્તુ.